अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज टॉप 12 जो सुपर 12 टीम्स हैं उनका मैच होने जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं उनका पहला मैच जो ओवरऑल वर्ल्ड कप का 13th मैच है, अबू ज़हबी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। 13th मैच, लेकिन ग्रुप 1 का ये पहला मैच इस वक्त लाइव हम कमेंट्री स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपके सामने नशर करेंगे। हम इंशाल्लाह बॉल बाय बॉल की जो कमेंट्री है वो इस चैनल के ऊपर करेंगे। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया है उसने टॉस जीता है और टॉस जीत कर सबसे पहले उसने फील्डिंग का फ़ैसला किया है। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉस जीत कर फील्डिंग का फ़ैसला किया है। साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं वो आएंगे इस वक्त बैटिंग के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि कितना टारगेट दिया जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ से। अगर हम टीम्स की बात कर लें इस वक्त, तो साउथ अफ्रीका की टीम में इस वक्त तक जो विकेट कीपर हैं वो डी कॉक और बवूमा, दोसान, डेविड मिलर, हेनरिच क्लासन, प्रेटरस, रबादा, महाराज, नॉर्टजी और तमरे शमसी शामिल हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 टीम है वो एरन फिंच जो है वो कैप्टन है, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीवन स्मिथ, मार्कस स्टोइन्स, मैथ्यू वेड, पैट क्यूमन्स, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और हेज़लवुड शामिल हैं। इनके जो विकेट कीपर हैं वो मैथ्यू वेड हैं, जबकि कैप्टन के एरन फिंच हैं। साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है वो बवूमा है इस वक्त। तो ग्राउंड में इस वक्त जो है टॉस हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने बैटिंग फील्डिंग का फ़ैसला किया है। आज बचाओ कल उड़ाओ। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का इस वक्त मैच लाइव आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक के इस यूट्यूब चैनल पर। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को इस वक्त
उन्होंने बैटिंग की दावत दी है। तो 13th मैच ये इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड कप का। पहले जो 12 मैच हो चुके हैं वो क्वालिफायर पोजीशन के थे, जिसमें 4 मुख्तलिफ टीमों ने जो है वो क्वालिफाई किया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो कंपोजिशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से वो देख सकेंगे। अब देखिए, ग्रुप 1 के अंदर ऑलरेडी टॉप 4 जो टीमें हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो ज्वाइन किया है ग्रुप 1 में। जबकि ग्रुप 2 के अंदर अफ़गानिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें शामिल थे। जबकि स्कॉटलैंड और नमीबिया की टीम ग्रुप ए और ग्रुप बी से इस ग्रुप में शामिल हुई हैं। दोस्तों याद रखें कि टॉप 2 टीम जो हैं इस ग्रुप की, इन मैचेस के बाद जो ग्रुप्स के मैचेस होंगे, हर टीम 5 मैचेस खेलेगी और जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो दोनों ग्रुप्स में से वो ऑटोमेटिकली एडवांस में ही नॉकआउट स्टेज में चले जाएंगे। जबकि जो दूसरी जो टीम्स हैं वो उन्होंने नॉकआउट स्टेज खेलनी होंगी। अगर हम बात करें पास्ट विनर्स की, तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो है, इससे पहले 6 टूर्नामेंट हो चुके हैं, 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें इंडिया ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता, जबकि पाकिस्तान 2009 में, इंग्लैंड ने 2010 में ये वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज़ इन 6 में से 2 विनर करार पाई, एक 2012 में और एक 2016 में। जबकि श्रीलंका जो है वो 2014 में इस वर्ल्ड कप की विनर करार पाई थी। तो इस तरीके से ये T20 जो वर्ल्ड कप की सीरीज़ है वो 2007 से शुरू होकर 2016 पे हुई। लास्ट ईयर ये 2020 में प्लान हुआ था, लेकिन ड्यू टू कोविड पोजीशन ये पोस्टपोन होने के बाद अब 2021 में ये हो रहा है। सुपर 12 ग्रुप 1 का लाइव मैच है इस वक्त अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में। आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान देख रहे हैं। ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त अबू धाबी ट्रॉफ़ी की नुमाई हो रही है, नुमाई हो रही है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफ़ी लेके आई जा रही है ग्राउंड के अंदर। और इसके बाद जो नेशनल एंथम है दोनों कंट्रीज़ का वो होगा। आज साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं उसमें बुवुमा कैप्टन है, डी कॉक, मैक्रम, बुसान, मिलर, क्लॉसिन, पेट्रस ये शामिल हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं वो एरन फिंच हैं, डेविड वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, स्टाइन्स, वेड, क्यूमन, स्टार्क और जैम्पा हैज़लवुड इस वक्त करेंगे। ऑस्ट्रेलिया won the toss and selected to field. Now both teams are entering into the stadiums. In one side Australia is entering in, and another side South Africa is entering for national anthem. Then after this Australia will continue his field and South African opening batsman will start the opening batting.
Now Australia will bowl first after winning the toss on today, 23rd October 2021. ICC Men's T20 World Cup is starting with Super 12 teams. Teams are now line up for national anthem. National anthem for both countries. Australians, let us rejoice, for we are one and free. With golden soil and wherefore toil, our hope is God by sea. Our land abounds in nature's gifts, all beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. Ladies and gentlemen, give it up for both the nations, Australia, South Africa. If you love the game, it's time to live the game. Now in ground, Australia won the toss and chose to field first. South African batting lineup will start his batting. Openers from South Africa entering into ground, and Australian fielders already available in field.
13th match, Group 1, Abu Dhabi, 23rd October. South Africa versus Australia. Today, Australia won the toss and selected to field first and giving options to South Africa for batting. National anthems already played and South African opening batsmen are entering into the ground. Australian fielders will continue the fielding first. This is the first match of Super 12 teams. Before this, 12 matches are completed in which two top teams are included in Super 12 from Group A and then secondly included from Group B. Here is the team lineup from Super 12, Group 1 and Group 2. Group 2 1 is included Australia, England, South Africa, West Indies, Bangladesh, Sri Lanka. And Afghanistan, India, New Zealand, Pakistan, Scotland, and Namibia are in Group 2. So, uh, 12 teams will playing for ICC Men's World Cup in this tournament. Which will start? The start is bowling and two batsmen from South Africa will continue. Captain Buvuma and Decock. Which stock will start? Left arm fast bowler will start his bowling. And good looking shot by Buvuma, the captain of South African, and directly play for 4 runs. With 4 runs, Buvuma is on 8 and South Africa on 10. Very good batting by Captain Buvuma and playing on individual 11.
Mitchell Stark continue to Decock. Decock will face first ball of Mitchell Stark and trying to getting gap, but ball is going to direct fielders. So after first over, South Africa 11 for none. Currently, Bavuma and Decock is playing from South Africa as a opening batsman. Today, South Australia win the toss and choose to field first in first over of Mitchell Stark. Very good two boundaries by Bavuma to Mitchell Stark. Now, new bowler is the Glenn Maxwell to Bavuma. As in power play, uh, first power play is only two fielders are outside the 12 foreman. Umpire is the Nitin Menon, standing in his 30th T20 international. Now Mr. Starr completed his over and Glenn Maxwell will replace him to Decock. Decock already faces one ball. Now Glenn Maxwell will continue ball to, and that's out. Bavuma captain is out on 12. Bavuma on 12, bowled by Glenn Maxwell. Bavuma, Tampa Bavuma is directly, it's quite low ball by Glenn Maxwell, and Bavuma missed out and hit it directly into the wicket. After 12 runs, two with two fours on seven balls, Bavuma played 12 runs. Now South Africa is 13 for 1. 13 for 1 after completing 1.3 overs. First over is very successful by Bavuma, two fours to Mitchell Stark, and now Australian uh, bowler Glenn Maxwell's got a successful wickets of Bavuma. Bavuma out by Maxwell on 12 runs. New batsman is coming out on the side of Bavuma, replacing.
No new batsman. Dusan is replacing Buma, not judged by very low ball. No spin is in Glenn Maxwell ball, and pulled out trying to gap, but only one runs by Decock after completing 1.5 hours, 15 for one wickets down, capturing Bavuma by Glenn Maxwell. After completing 2 overs, South Africa is 16 for 1. New batsman Dawson and Decock is playing on crease. Mitchell Stark successfully completed his work of first over, and then Glenn Maxwell uh, Mitchell Stark conceding after 11. Now captain is changes bowling, and Edward Hazelwood is, will continue. And out. Another wicket is down. Dusan is also down. First ball of Hazelwood and directly catch behind in wickets. Hazel Hazelwood out to Dusan, catch behind on 2 runs. On 13th match, Group 1, Abu Dhabi playing Australia and South Africa. Australia win the toss and choose to field after completing 2.1 overs. South Africa playing on 16 for 2. Two players, Bavuma and Dusan, already out by Australian field bowlers. New batsman Eden Markram facing Hazelwood. Australian field bowlers successful to getting top order. Two last wickets is down by Dawson. Hazelwood. Now Deco continue his
17 for 2 after completing 2.3 overs. On crease now playing Eden Markram and Decock on 2 runs. ICC मैच T20 वर्ल्ड कप का ये मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान इस वक्त अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद चल रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 17 रन के बस 2 विकेटें गंवाई हैं और 2.3 ओवर्स का मैच अब तक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच बॉल टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा साबित हुआ और अब तक 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो साउथ अफ्रीका के वो आउट हो चुके हैं। अब आएंगे हैज़लवुड बॉलिंग के लिए और हैज़लवुड ने बॉलिंग की तो डिकॉक कोई रन नहीं बन सका। 17 पे 2 आउट हो चुके हैं इस वक्त तक। टॉप ऑर्डर के जो 2 बैट्समैन थे, जिसमें कैप्टन बबूमा भी शामिल थे और दुसान भी थे शामिल, वो दोनों आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं इस वक्त। आखिरी बॉल करेंगे हैज़लवुड अपने कामयाब ओवर की, जिसमें उन्होंने 1 रन दिया है और 1 विकेट हासिल करने में वो कामयाब हुए हैं। हैज़लवुड स्टार्ट हुए और अभी बॉल करेंगे, अंपायर के पास पहुँचे और बॉल की और ये गैप हासिल करने की कोशिश डिकॉक की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 3 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 17 for 2। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पहला मैच है। यहीं से स्ट्राइक रेट जो है वो तय होना शुरू हो जाता है और अब तक जो टीम्स हैं वो इनके उसमें शामिल हैं। जो अगर हम उनके ऊपर बात करें तो अब तक ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका कोई भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुए। इंडिया ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता, 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज़, 2014 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ ने अगेन 2016 में वर्ल्ड कप जीता। इस वक्त ग्रुप 1 का जो मैच हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम में शामिल हैं। इस वक्त बॉलिंग के लिए आए हैं मैक्सवेल। दोबारा अपना पहला कामयाब ओवर करवाने के बाद उन्होंने बॉल करवाई और 18 for 2, 13.2 ओवर्स। और ये गैप हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं रूम मिल सका डिकॉक को। तीसरी बॉल ग्लेन मैक्सवेल की। डिकॉक बात करेंगे और ये उठता हुआ शॉट और 4 रन्स। ये इस 4 रन के साथ डिकॉक का स्कोर 6 और 22 for 2। फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर सिर्फ 2 फील्डर्स जो हैं वो 60 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं। इस वजह से उठता हुआ शॉट खेला और एक और खेलने की कोशिश की, गैप हासिल की कोशिश की, लेकिन स्लिप कवर्ड पे फील्डर मौजूद थे और ये हासिल नहीं कर सके गोल। इससे पहले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने आउट किया बबूमा जो कैप्टन है उनको, और ये रिवर्स स्वीप खेला और ये फील्डर के पास एक बॉल के साथ ओवर का अख्ताम हुआ और
4 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 23 for 2। 5.75 रन रेट इस वक्त चल रहा है, करंट रन रेट। साउथ अफ्रीका के 2 टॉप के खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त तक आउट हो चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल और हैजलवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच इस वक्त लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, जबकि साउथ अफ्रीका को बबूमा लीड कर रहे हैं, जो कि ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आते हैं और ओपनिंग बैट्समैन आउट हो चुके हैं। बबूमा डुसान इस वक्त आउट हो चुके हैं और ये हैजलवुड अपना ओवर का जारी रखेंगे और ये आउट हो गए। ये पुल करने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल अपनी ही बॉल उनकी विकेट्स के ऊपर लग गई, जिसकी वजह से डिकॉक आउट हो गए। हैजलवुड की ये दूसरी विकेट। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गए। ट्वेंटी थ्री फॉर 3 पुल करने की कोशिश की थी डिकॉक ने, लेकिन वो हिट नहीं लग सकी, उनके पैड पर लगी और साथ ही पीछे विकेट को टच कर गई, जिसकी वजह से वो अपनी ही बॉल पर आउट हो गए। फोर 4.1 ओवर्स का मैच इस वक्त तक हो चुका है। न्यू बैट्समैन क्लासिन ज्वाइन करेंगे इस वक्त मार्करम को। फोर 4.2 overs completed, 23 for 3। Top order batsmen already out by Australian bowlers. Now Hazlewood continue to Klassen. Now Hazlewood continue his bowling Klassen. Twenty-three for 3। तीन खिलाड़ियों को अब तक
ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स आउट कर चुके हैं साउथ अफ्रीका 23 फॉर 3 और ये 5वां ओवर ख़त्म हुआ और 5वें ओवर के अख्ताम पर 23 फॉर 3 2 ओवर्स हैज़लवुड करवा चुके हैं और 2 ओवर्स के अंदर हैज़लवुड ने 1 रन दिया है सिर्फ, जबकि हैज़लवुड जो है वो 2 विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल 1 विकेट हासिल की है, जबकि सबसे पहला ओवर जो मिचेल स्टार्क का था वो ख़ासा महंगा साबित हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ये 13th मैच ग्रुप 1 अबू ज़हबी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं मार्करम और क्लासन। मार्करम इस वक्त 2 रन पर हैं, जबकि क्लासन इस वक्त 0 पे हैं। अभी तक उन्होंने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया। अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा हैज़लवुड अपना कंटिन्यू करेंगे इस वक्त। अब न्यू बॉलर जो हैं वो पैट क्यूमन्स हैं। नए बॉलिंग चेंज की है इन्होंने। अभी पैट क्यूमन्स जो हैं वो 4th बॉलर इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं इस वक्त। 31 मैचेस अब तक 37 विकेट्स ले चुके हैं और बेस्ट 3 फॉर 15 है इस वक्त। इकॉनमी रेट 6.93 है इस वक्त। और पैट क्यूमन्स ने अपनी बॉल की मार्करम को पहली कोई रन नहीं बन सका इस वक्त और ये दूसरी बॉल के लिए आए हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट खेला उन्होंने। 23 फॉर 3 आफ्टर 5.2 ओवर्स कंप्लीशन। आज बेहतरीन स्टार्ट लिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने और 3 टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अच्छा खासा प्रेशर इस वक्त रिमेनिंग जो साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं उन पर है। क्यूमन्स कंटिन्यू करेंगे और ये अपील की, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और एम फिंच ने भी कोई रिव्यू के लिए नहीं रिक्वेस्ट की, इसलिए कंटिन्यू करेंगे क्यूमन्स। .3 overs completed. 4.18 run rate is currently run rate following by South Africa. First 3 ball dots by Clemens, no runs on this ball. In Abu Dhabi Stadium, 13th match Group 1 is continued. Clemens call to mark run, and it is successful for 2 gap and 4 runs. Klassen Markram successful in his first .27 for 3 after completing 5.4 overs. अच्छा था, शॉर्ट गैप हासिल करने में कामयाब हुए। नेक्स्ट बॉल कराएंगे क्यूमन और ए सिंगल लेने में कामयाब, हिट करने की कोशिश की लेकिन विकेट को नहीं लगी। इस तरीके से 5.5 28 ऑलमोस्ट 59% हाफ वे लेंथ यूज़ हो रही है इस वक्त और 41% 6 मीटर्स की। क्यूमन्स अब तक 5 रन दिए हैं अपने पहली 5 बॉल्स पर। 1 चौका इसमें लगाया है मार्करम ने और फिर सामना करेंगे क्लासिन और 1 रन बनाने में कामयाब हुए क्लासिन और इस सिंगल रन से साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 ओवर के अख्ताम पर पावर प्ले ख़त्म हुआ। इस पावर प्ले के अंदर 23 रन बना सके हैं सिर्फ
जो है प्लेयर्स इस वक्त साउथ अफ्रीका के सिर्फ 29 रन्स 4.83 के रन रेट से इस वक्त तक साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त बहुत पीछे के उनका सामना इस वक्त ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से होगा, लेकिन देखते हैं वो कितना टोटल रन दे पाएंगे। इस वक्त तक अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो कामयाब रहे हैं। टुडे ऑन 23rd 21st 2020 ICC Men's T20 World Cup is continuing. First match of Group 1 13th match Australia versus South Africa is continuing. Today Australia won the toss and selected to choose field. In first 6 hours, South African teams only make 29 runs on 3 wickets and 6 balls. Now Zampa will continue starting his spell. Zampa to Klassen and single on by Klassen. Now 30 for 3 on 6.1 hours. No power play is finished, and no next 4 fielders are outside 60 yards. Zampa to Klasin and successful trying to two, but not successful. Markram. Now after completing 6.2 hours, Zampa to Klasin and successful to get covers and good toss by Australian fielders in and also South African successful uh, 3 runs on this third successful stop by Australian fielders on near the boundary lines. Umpiring checking the boundary, but no boundary. No. Markering is playing on 8. With 6.44 hours completion, 35 for 3. Now 5 fielders are placing by Aaron Finch outside 60 yards. Zampa to Klasin and call for catch up, but no. Successfully get gap between 2 fielders and 39 for 3 by Klasin. Zampa is now under pressure and another but missed. Middle of the stump, but bat and pad is so after completing the 7 hour 39 for 3 South Africa. 7 hours are completed. Most expensive over after starting the wicket. Zampa 1 hour and 9 runs. In first over, Mitchell Stark also giving the 11 runs in 1 hour. However, Glenn Maxwell and Hazelwood, Pat Cummins are very good in economy rates. 2 wickets got by Hazelwood, top orders of South African cricket team. Now South Africa current run rate is 5.57, so it's quite reasonable.
Now Cummins is starting his bowling to Markram. First ball, Markram. Cummins is starting eighth over and his second over. Very successful fielding by Australia. Australian bowlers bowling in a sensible way and successfully guarded gaps beauty. Class in play a beautiful shot and now with this 44 for 3. The current run rate is slowly increasing and going into a reasonable format as already South African batsmen are in under pressure because the top three batsmen already out. And now Lasin play cute humans and trying to 2 runs, but Markram saying setback. Now on crease 45. Next players is the David Miller, Petros, and Rabada on 8th position, 6, 7, and 8. There are three all-rounders are remaining, but now Markram and Klasin is playing in a very well state. Now 45 for 3. After completing 7.4 overs, first wicket out by Glenn Maxwell, and then second wicket is caught behind, and third wicket by De Kock is himself. He hit it the ball to the wickets. So Humans to Markram. So single run by Markram. Currently, South Africa team is playing 46 for 3 on 7.5 overs. Last ball by Humans. And another wicket is down. Humans out to Klasin. Catch by Smith. And so fourth wicket is down by uh, Humans. So after completing 8th over, now 46 for 4 Australia in a very successful outfield. Now South Africa in a very bad position, 46 for 8, and Klasin is out. Marker is playing on 11, facing 12th ball. Two top world teams are playing in Abu Dhabi, Australia, and South Africa. South African team currently facing a lot of batting issues. Four wickets are down, including Bavuma, De Kock, and Klasin Dusan. Fourth players are already out. Australia won the toss and chose to field first. So successfully, the decision of Aaron Finch is very successful because current position only 46 runs on board and 4 wickets down on 8 overs.
New batsman is David Miller. Uh, Join Markram. David Miller Stark. No, again Stark join the bowling lineup. Little bit edge involved in last batsman Klassen, and on point a very good catch by Smith. 46 for 4 on 8.1 overs. And Mr. Starr continue bowling to Markram. After completing 8.2 overs, Australia is 47 for 4. And next ball, Stark to add successfully Markram to direct 4. And 52 for 4 after completing 8.3 overs. Mr. Stark to Markram and pull the shot successful to getting 1 runs, playing on 18 runs. Fifty-three for 4. Mr. Stark continue in his another expensive overs. Last ball to Markram, but without ball. 9 overs, 54 for 4. So overall current run rate is 6 per overs by South African teams in a very critical position because 6 runs per run rate is not enough to give the chasing target to another top world top Australian batsman lineup. So Aden Markram, David Miller will try to increase the current run rate. 54 for 4 after completing 9 overs. No, Zampa will continue his bowling.
Glenn Maxwell. Glenn Maxwell will continue his third over to David Miller. "56 for 4" after completing 9.2 overs. Glenn Maxwell continue and 9.3 overs completed. लाइव कमेंट्री मैच देख रहे हैं आप इस वक्त। 13 मैच ग्रुप 1 अबूजहबी से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, और ये बॉल करवाई मार्करम को। ग्लेन मैक्सवेल ने एक रन बनाने की कोशिश लेकिन नहीं बना सके। और इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल विल कंटिन्यू हिज बॉलिंग, और ये बॉलिंग सिंगल रन बनाने में कामयाब हुए इस वक्त डेविड मिलर। "58 for 4" 3 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 59 for 4। तो सो नो ड्रिंक्स ब्रेक स्टार्टेड।
ये ड्रिंक्स के बाद इस मैच दोबारा शुरू हुआ जाता है और इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं मैक्सवेल। अपने ओवर की ये इस वक्त 4 पास करवा चुके हैं और साउथ अफ्रीका इस वक्त 66 फॉर 4। $10.4 ओवर्स का इस वक्त तक मैच हो चुका है। इस वक्त और ये चांस था, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो ये रन आउट हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। मैक्सवेल अपने ओवर की करेंगे और ये 4 रन्स, तो 71 फॉर 4 11.4 ओवर्स। अब तक जो 11.4 ओवर्स ग्लेन मैक्सवेल के 4 ओवर्स कंप्लीट हुए और 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने 24 रन्स दिए। इस वक्त एडम जैम्पा जो हैं वो 2 ओवर करवा चुके हैं और 2 ओवर में उन्होंने 13 रन दिए हैं। 71 इस वक्त तक रन हो चुका है 11 ओवर्स के अख्ताम पर। आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया, जो कि उनका कामयाब एरन फिंच का साबित हुआ। अब तक 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। एडन मार्करम और डेविड मिलर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। जो एडम मार्करम है इस वक्त 26 रन्स पर मौजूद हैं। उन्होंने 25 बॉल्स का सामना किया और 3 छक्के लगा चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से डेविड मिलर जो हैं वो 10 रन के मजमूई स्कोर इनफरादी स्कोर में मौजूद हैं और उन्होंने 12 खेले हैं। डायरेक्ट हिट लगाई फील्डर ने, लेकिन अब देखना होगा कि ये किस तरीके से। थर्ड अंपायर को रेफर हुआ है इस वक्त। थर्ड अंपायर को रेफर हुआ था लेकिन नॉट आउट हुआ। इस वक्त 12 ओवर्स का मैच हो चुका है, 12.1 ओवर्स का। और बॉलिंग करवाने के लिए आई है हैजलवुड। इस वक्त अपना दूसरी बॉल करेंगे अपने ओवर की और ये गैप हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सिंगल रन ही बना सके। $72 for 4 South African team. Now 12.2 overs completed, 73 for 4. Maxwell is continuing his bowling and already successful. And there's another try for run out, but not successful. 12.3 overs, 74 for 4. There is the excellent bowling by Mitchell Stark and excellent bowling by Hazelwood. Very good, quite length and direct into the bat, direct into wicket. So South African batting lineup not successful to hit easily. Hazelwood to Markram. Successful for 1 run. Josh Hazelwood fastest ball is 140, and slowest 132. Average baller speed is 138. Now bowling his fifth ball of third overs, and Miller is trying to get 2 runs and successful. So 77
2 runs added in David Miller. 77 for 4 after completing 12.5 overs. No, is here is the run rate is 6, accurate 6 runs after completing 5.92 run rate after completing 13 overs, 77 for 4. Eden Markram is playing on 28, already played 26 balls. However, David Miller is playing on 13. Very successful bowlers by Australian captain Aaron Finch follow Mitchell Stark, Glenn Maxwell, Hazelwood, Pat Cummins, and Zampa. Uh, Two batsmen out by Hazelwood, 3 overs and 7 runs. Glenn Maxwell already completed his 4 overs, 24 for 1. Now 77 for 4 after completing 13 overs. Last 7 overs are remaining, but 5.92 run rate is not enough for Australia. Now Zampa will start his third over. Already bowled 2 overs. Single by Markram with the single 78 for 4. 13.1 over. Justin Langer is the Australian head coach. Um, Seeing the performance of Australian fielders, bowlers, and captain outside the ground, and 78 for 4. Now Zampa will bowl to David Miller. David Miller is playing on 14 and play for single run, but misfield, and now trying to second run, success in second run. 80 for 4, 13.2 overs completed. Next ball, Zampa to David Miller. And it's out. A review to third umpire, South African review. David Miller, original decision is out. No, no, no edge. No, third umpire is using ultra edge technology to see that if any bat involved in this. Original decision is out. South Africa got review. Third umpire watching the different angles of this ball and will take final decision. Now in line, whizzing in line, impact in line, if hitting
And fifth player is down 80 for 5. David Miller out on 16, played 18 balls. Now 80 for 5 on 13.3 overs. Zampa successful in his third over and got at David Miller wickets. After completing 13.3 overs, South Africa is playing on 80 for 5. Five players are already out by Australian bowlers. Now, currently, David Miller out on 28 by Zampa LPW. Uh, South Africa got review, but third umpire also got given the decision as out after using the ultra technology and different type of angles of videos. Now, new player is Petrus. Come on, Chris. Join Markram. Zampa to Petrus. Now Markram will face Zampa and single run. Play for single run. Zampa playing a very good ball, and here is the in, pitching in line, impact in line, and stump in line. Or another wicket is down. Petrus out on second ball, out on one. Six wickets is down. 14 overs completed. 82 for six. Petrus is also out. Catch behind by a wicketkeeper. Zampa success in his third over after completing third over. 82 for 6 of South Africa. Now almost all top order batsmen of South Africa is back to pavilion, and only tail-enders and bowlers are remaining. But Aiden Markram is on still on crease, playing on 30 runs. Already played 28 balls. 82 for 6 after completing 14 overs. Now another player on crease. Very low run by South African batsman. I think Maharaj is the new batsman crease on. Adam Zampa success his third over and two wickets down in 1 over. 3 overs, 18 for 2, or economy rate is the 6. 83
for 6. Cummins will start his over to Maharaj. Adam Mukram is playing on 31. Oh, T20 carrier is the put through the air, economic in the middle overs, bowls googlies in final overs. That is the statistic showing on screen. 83 for 6. Humans will bowl to Maharaj and missed. This one missed and trying to run out, and that's another wicket sit down. Maharaj is run out. Miscommunication between Markram and Maharaj. On one side, fielders speedy go through the balls, and here is the Maharaj down on 0. Maharaj down on 83 for 7. Actually, Maharaj is slips. Justin Langer is smiling because he is head coach of Australia. So out 83 for 7 after completing 4.3 overs. Now 7 wickets are down. 83 for 7. Very good bowling by Australian fast bowlers and spinning Adam Zampa and Glenn Maxwell. Glenn Maxwell already got a 1 wicket. However, Adam Zampa completed 3 overs, 18 runs, and 2 wickets. Now on new batsman will come for South Africa, and that is Rabada. Rabada joined Markram. Markram playing on 31. $83 for 7. No. 83 for 7. 5.72 run rate by South Africa. Now Rabada will face Pat Cummins. Australia, Pat Cummins, Rabada 14.4 hours. South Africa 83 for 7, 18.4 hours. Fall of wickets, पहली wicket, and it's on helmet, and just little bit showing the bounce of wickets. Here is the past winners in ICC Men's T20 World Cup.
India 2007, Pakistan in 2099, 2010 England, West Indies in 2012, Sri Lanka 2012, and again West Indies 2016. So South Africa is in trouble, 83 for 7 after completing 15 overs. Markram is playing on 31. Pat Cummins completed his third over. Now only 5 overs are left. Current run rate is the 5.53. 5.53 is the current run rate by South Africa. That is very low run rate. Now South African is the Zampa will bowl his last over and use the crease. Markram come up for single. Zampa to Rabada, left-handed batsman. Rabada will face Zampa, already successful in his 3 overs and got 2 wickets. 87 for 7 in 85 for 7 on 15.3 overs. Markram is trying to hit balls but not successful. Zampa is bowling in a very well manner. It is 6 for 7 after committing 15 point after committing 16 over. 87 for 7. Zampa already completed 3 overs and 14 runs. Zampa completed his 4th over and completed in 21 runs. Now, last 4 overs are remaining. South Africa only success is 5.37 run rate. His player will start to hit up, so a run can increase. 86 for 7 is the 5.37 and last 5 over run rate is the 4.6. 3 wickets down in last 5 hours. Now again Hazelwood will bowl his last over to Markram and it's he's gone or for 6. Markram bowl for 6.
So with the 6, 92 for 7. Markram on 38. That is very good hit and maximum 6. 16.1 overs. Not out on 38, 39. Played 34 balls. Again, Hazelwood will call to Markram, playing on 39, and that was white. It's look like white. Yes, white. 3.1 hours. Hazelwood successful on 2, and economy rate is the 4.42. Now, projected score is the 127 on this current run rate. If South African batsmen will not play in a fast way. 40 not out by Aiden Markram. And Rabada is playing on 1. Again, Hazelwood will play with ball to Rabada, and that is dot ball. Josh Hazelwood already successful in his spell and got 2 wickets, 15 runs, 1 maiden overs, 4.29 economy rate. And that is played straight Rabada by for 4 runs. 98 for 7 after creating 16 point over. Rabada will face to Hazel. Played direct to bowler, but no run. Now South Africa reaching 100 runs in on 16 overs, 98 for 7, 16.5 hours already completed. No lost balls by Hazelwood to Rabada, and again dot ball. So 17 over finish, and after 17, 98 for 7. Hazelwood completed his spell, 4 overs, 1 maiden, 19 runs, 2 wickets, and economy rate is the 4.75, 15 dot, 1 4, and 1 6. So Glenn Maxwell, Hazelwood, and Adam Zampa already completed his overs, 4 overs. Now Mitchell Stark having 2 overs and 1 over by Pat Cummins. 3 overs left, 4.76 run rate by South Africa in 13th match, Group 1 first match between Australia and South Africa. Today Australia won the toss and chose to field first, and South African batsman not successful in batting lineup. 98 for 7. Only Aiden Markram is playing on 40, 35 balls faced by 98 for 7.
Mitchell Stark will continue his bowling. Already 19 runs and no wickets, successful in any wickets. Mitchell Stark to Markham, and that is an out. And adds out, Markham is also out. On boundary line, fielders catch by on the ball of Mitchell Stark, and Eden Markram, well settled batsman, is out on 36 balls, 40 runs on 36 balls. No, settled batsman Eden Markram out on 40. He hit three fours and 1 6. Overall strike rate is triple one is the strike rate. Current strike rate is this 5.7 of South Africa. Overall score 17.1 hours completed, 98 for 8. Last two batsmen are remaining, and very critical position for South African batsmen in Abu Dhabi Stadium, ICC Men's T20 World Cup. That is very crucial point. So 98 for 8. New batsman is the Norterji. Right-handed batsman join Rabada infield. It's a start to Rabada. That is dot. Another dot. Very good wicket by Mr. Star up Markram. Now, five fielders are outside the 60 yards, and Rabada is trying to hit ball over the fielder but not success. So 7 points, 17.3, 98 for 8. Now again Mr. Stark will bowl to Rabada, as already playing on 5 run. That is missed. 17.4 hours completed. 17.4 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 98 के विकेट स्कोर पर 8 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका की। नॉर्टरी और रबादा इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का रबादा। और अब तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। मिचेल स्टार्क बॉल करेंगे रबादा को, और ये आउट किया, और ये ऊपर खेलती हुई शॉट लेकिन कैच नहीं हो सका, और सिंगल रन के लिए रबादा खेले। अब क्रीज पर आ गए हैं नॉर्टरी, और 99 फॉर 8, 17.5। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑलरेडी अपना स्पेल कंप्लीट कर चुके हैं। 99 फॉर 6 रन पर इस वक्त मौजूद हैं रबादा। टॉप जो बैट्समैन थे वो बहुत अर्ली आउट कर लिए गए थे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की जो बैट्समैन है वो अंडर प्रेशर आ गए थे, और अंडर प्रेशर आने की वजह से वो सही तरीके से खेल नहीं सके। बहुत ही कम 6 और बहुत ही कम चौके इस वक्त इनिंग में लगे हैं। 99 फॉर 8, 18 ओवर का आखिरी बॉल नीचे स्टार करेंगे, और ये खेला फुल टॉस बॉल थी, और इसको खेला बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स ने पिक किया और 2 रन लेने में कामयाब हो गए। तो इस 2 रन के साथ इस वक्त 101 फॉर 8 ऑन 18 कंप्लीशन। 3 ओवर्स अब तक मुझे स्टॉक के हो चुके हैं। 3 ओवर्स के अख्ताम पर उन्होंने 22 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल की है।
तो सेंचुरी मुकम्मल हुई इस वक्त 101। 18 ओवर के अख्ताम पर रन रेट जो है इस वक्त 5.61 का रन रेट है। टुडे ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड चूज टू फील्ड। South African captains and other skippers are one by one downs. Very low wickets. So South African batsman not helpful. Who got another big score. Currently 8 wickets are down. 2 overs remaining. One for Mitchell Stark and maybe one for Pat Cummins. That is the decision of on pinch. Now Cummins started his last over. Rabada is on crease facing. Here is the projected score 119 or 121 if 9 runs per hour or 10 runs per hour by South African fielders, batsmen. But Cummins is bowling to Rabada, and another I think here that is trying, but no, 2 runs by Rabada. The 2 runs 103 for 18.2 overs. One zero three for 18.2 overs. Pat Cummins to Rabada and misfield by wicketkeeper but no runs. 18.3. One zero three for 8 and by run 1 run on by 104 for 8. Last 12 balls faced by South African only 6 runs. Only 6 runs in last 2 overs. So very good bowling by Australian bowlers. South African batsman only in 3 extra runs given by Australian fielders. 18 18.4 overs completed. 104 for 8. Run rate is the 5.57. Now Triji will face Pat Cummins. Five point 58 run rate, 105 for 8, 18.5 overs completed. Now Rabada is on crease, facing Pat Cummins, bowling his last overs, last balls, and hit by it for 1 run. 19 overs completed, 106 for 8, 5.58 run rate, and Pat Cummins is completed his spell 4 overs and 17 runs, 1 wickets for Pat Cummins. Top
over is the 17th over, 13 runs, and first over 11 runs. South African only 4 extra runs given by Australian bowlers and fielders to South Africa. Last over will be continue by Mitchell Stark. Four fielders are inside 60 yards, and other fields are one is on slip field. Mitchell Stark will bowl his last over has already 22 runs given and one wicket successful. Rabada play straight and trying to 2 runs and successfully 2 runs. So 108, 10 for 8, 19.1 hour. 108 for 8. 19 point which is struck to the Bada, and that is in the air and maybe catch. No, that for 6. Rabada play for 6. And here is the 114 for 8. Rabada play for 6 run, 88 meters 6. Very long, sir. So straight and play for straight bat with single handed bats. 114 for 8. 19.2 hours completed. Again, Rabada play for 1 run and 115. 115 for 8. Only 3 balls are left. Now, Norterji will face Mitchell Stark. And that is out. Nokia is out on 2. Nine wickets down. Nokia play for upper ball, trying to hit out the ball over the fielders, but not successful. Not got successful. And so 115 for 9, 19.4 hours. Last batsman entering into the ground. 115 for 9. After only 2 balls are left for South African batting, and very good decision by Finch to win the toss and choose to field first. Now his team will chase this target very easily if top order batsmen play very well. The Buma will try to out the top order Australian batsmen
in very first or second over. आखिरी ball is तबरेज शमसी. And dot ball, and then I try to out, but no, not hit to, with one single run. No, Rabada is on strike. $116 for 9 after completing 19.5 overs. Last ball by Mitchell Stark to Rabada. Rabada is playing on 17, and that is hit over the fielder and found the gap, but only 2 runs. Only successful on 2 runs. Now refer to third umpire for run out by to Shamsi. And I think he is completed. He is completed his runs. Not out. So 118 runs and 198. बीस ओवर्स के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ने 118 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर. 20 ओवर्स का अख्ताम हो गया. अब ऑस्ट्रेलिया को 119 रन का टारगेट मिला है और ये देखते हैं कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने टारगेट दिया है 119 रन. आज टॉस खेलकर पहले फील्डिंग का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 118 रन बना सके. मार्करम जो हैं वो इस वक्त 40 रन के टॉप बैट्समैन हैं जो 36 बॉल्स के लिए हैं. उसके बाद रबादा ने 19 रन बनाए हैं और मिलर 16 रन बना सके. टॉप जो बैट्समैन हैं बॉलर्स हैं उसमें मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें ली हैं. हैज़लवुड ने 2 विकेटें ली हैं. जम्पा ने 2 विकेटें ली हैं. 5 ओवर्स का इस्तेमाल किया है. तो इस वक्त 5.9 का रन रेट रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया को इन 20 ओवर्स में. इस वक्त हम बात करें तो ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का मैच 23 अक्टूबर को मैच हो रहा है. 13th मैच है ये इस वक्त और 13th मैच ग्रुप 1 अबू ज़हबी का. अगर हम बात करें इस हवाले से कि ये मैचेस की जो डिटेल है टीम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस है तो उसको हम देखेंगे. तो सबसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी पास्ट जो विनर्स हैं इस वक्त वो कौन कौन से पास्ट विनर्स शामिल हैं. और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में 6 अब तक वर्ल्ड कप हो चुके हैं. उन 6 वर्ल्ड कप्स में सबसे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ वो 2007 में जिसे इंडिया ने जीता था और उसके बाद 2009 में पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीता ICC मेंस T20 का और 2010 में इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप जीता. 2012 में ये वेस्ट इंडीज़ इसकी विनर कर पाई और 2014
में ये श्रीलंका उसका विनर हुआ वर्ल्ड कप का, और अगेन फिर 2016 में वेस्ट इंडीज़ हुआ। अगर हम बात कर लें सुपर 12 के टीम्स की, तो जैसा कि अगर आपको पता है कि 8 टीमें ऑलरेडी इस उसमें अप्लाई कर चुकी थी, ज्वाइन कर चुकी थी, जबकि 8 जो टीमें थी उन्होंने क्वालिफाई खेला। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये क्वालिफाइंग खेला गया, जो कि दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से जो आए हैं वो श्रीलंका ने ज्वाइन किया ग्रुप वन में, और ग्रुप जो ए की सेकंड पोजीशन थी वो नमीबिया की थी। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और श्रीलंका ग्रुप वन में आए, और ग्रुप टू में अफ़गानिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया की टीमों ने ज्वाइन किया। दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि इस वक्त टॉप 2 जो टीम्स हैं ग्रुप्स की, जिस वक्त ये तमाम मैचेस हो जाएंगे तो हर ग्रुप में से जो टॉप की 2 टीमें हैं वो नॉकआउट स्टेज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जबकि जो दूसरी 2 टीमें हैं वो आपस में खेलेंगी और उनमें से फिर नॉकआउट में जाएंगी। इस वक्त इनिंग्स की ब्रेक है, और इस इनिंग्स में 119 का स्कोर इस वक्त रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर्स में, और 20 ओवर्स में 120 बॉल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 5.9 रन रेट रिक्वायर्ड है। ब्रेक के बाद हम अपनी ये लाइव कमेंट्री अबू धाबी से 13th मैच ग्रुप 1 की कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया की इनिंग शुरू होने में टाइम है। इस वक्त 20 ओवर्स के अंदर 118 रन्स बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, और उनके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखी गई है कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया अपने बॉलर्स का, जिसमें कामयाब हुए फिंच जो हैं वो 9 विकेटें गिराने में। शुरू में ही दूसरे ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने बबूमा को आउट किया, तो वहीं से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्लॉगिंग की, ऑनलाइन अर्निंग की जो वीडियोस हैं वो इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, और आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग के जो मेथड्स हैं, कंप्यूटर की जो ऑटोमेशंस हैं इस वक्त गवर्नमेंट के इदारों में, ख़ासतौर पे उसमें नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, एक्साइज के हवाले से, सिटी ऐप और पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के हवाले से जो अपडेट्स आती रहती हैं उनको मैं इसके ऊपर लाइव लेकर आता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो
उसको लाजमी विज़िट करें आप। स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, एक तो सब्सक्राइब करें उसे और फिर उसको लाइक करना ना भूलें। अगर इस वक्त मैं आपको दिखाऊं मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो वीडियोस मौजूद हैं इस तरीके से, ये मेरी लाइव। लेकिन अगर हम प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत सारी डेटाबेस के हवाले से ट्रेनिंग्स और मोबाइल्स कम्युनिकेशन इस किस्म की सारी जो वीडियोस हैं वो मेरी मौजूद हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। मेरे चैनल को ज़रूर इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी की वीडियोस हैं मैं वो उनको लेके आ सकूँ। अगर हम देखें मेरी जो वीडियोस हैं इस वक्त मौजूद हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो अभी स्टार्ट करेंगे अपनी बैटिंग। सबसे पहले आरन फिंच आए हैं अपनी इसके लिए। डेविड वार्नर और आरन फिंच हैं वो एरन फिंच इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन एंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन इस वक्त आया है बैटिंग के लिए। और
हम क्लियर करते हैं इस वक्त बॉलिंग का जो स्टैटिस्टिक्स हैं साउथ अफ्रीकन के, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के लिए आए हैं इस वक्त रबादा। रबादा बॉल कर रहे हैं इस वक्त ऑन फिंच को, और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है उसको किस तरीके से साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं वो कवर करते हैं। रबादा, डेविड वार्नर और फिंच को करेंगे। 1 रन बनाया अभी तक 3 बॉल्स पर, और ये खेला रबादा बॉल करवाए फिंच को। थोड़ा सा बाउंस मिला है इस वक्त रबादा को, और वो फिंच को करवा रहे हैं इस वक्त बॉल। तो इस वक्त डेविड वार्नर 1 रन पर हैं, जबकि और ये वाइड होगी। पहले ओवर की 4 बॉल्स करवाई हैं इस वक्त। अभी तक रबादा बॉलिंग के लिए आए हैं, और रबादा ने 2 रन दिए हैं पहले ओवर में। पहले ओवर की 5वीं बॉल की इस वक्त कोई स्कोर नहीं हुआ 2 रन के ऊपर। 119 का टारगेट दिया है इस वक्त 120 बॉल्स पर। 5.9 का रन रेट रिक्वायर्ड है इस वक्त। डेविड वार्नर और एरन फिंच जो हैं वो सामना कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। टू द लाइन, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ पहला ओवर इख्तिताम हुआ। पहले ओवर के इख्तिताम पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नीड 119 रन्स ऑन 114 बॉल्स। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त 117 रन चाहिए 114 बॉल्स पर। करंट रन रेट जो है वो 2 का, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बन सके हैं, जबकि 6.15 का रन रेट रिक्वायर्ड है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को। डेविड वार्नर और आरोन फिंच जो हैं वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं मौजूद। दूसरा ओवर करवाने के लिए आए हैं इस वक्त नोकिया। नोकिया इस वक्त करवाने के लिए आए हैं। फास्ट बॉलर हैं, राइट हैंडेड फास्ट बॉलर्स, और मिस किया डेविड वार्नर ने। जो T20 कैरियर्स हैं उसमें नोकिया ने वार्नर को 5 इनिंग्स 59 रन में 41 बॉल्स और 2 दफ़ा आउट भी किया है वार्नर को नोकिया ने। ये लेग साइड पे खेला, गैप हाजिरी कोशिश की लेकिन नहीं असर कर सके, और कोई रन नहीं बन सका इस वक्त तक। $117 रन रिक्वायर्ड ऑन 112 बॉल्स। 2 runs 1.2 hours completed। हाईएस्ट 140 किलोमीटर डिलीवरी जो है
Mark Wood, England. Then Ferguson, North G 71% since 2020. Nokia to and that is quite wide. So 3 runs on 1.3. Nokia to David Warner. David Warner play for single run, so 4 runs. South Africa needs more wickets to defend his 118 runs. No more than two fielders allowed outside the 30-yard circle, 1 to 6 hours in first power play. Here is the second hour is continue. 1.4 hours are completed and 4 runs for no out. Now Nokia will bowl to Finch and a play for up and that's out. South African first wicket is down. Aaron Finch, captain, is out on 0. 4 for 1. Goal by Nokia. Finch without scoring on 4 balls. He played Australia 4 for 1 on after completing 1.5 overs. Chasing scored 115 on 100. South Africa made 118 runs on 20 overs. Now Australian team chasing the target 119. So in second over, Nokia out Aaron Finch. 4 for 1. New batsman is Mitchell Marsh. Mitchell Marsh join on the place of over second over finish. 4 for 1 after completing 2 hours. Now Australia needed 115 runs on 106 balls. As previously Australia won the toss and chose to field. So in first inning, South Africa bound on 118. Very good bowling by Mitchell Stark and Zampa and Hazelwood. So now it's turned the batting lineup. How Rabada and shot. Rabada bowled to David Warner but short and he pulled for 4 runs. David Warner is playing on. Now again Rabada bowled to David Warner.
8 रन के मजमूई स्कोर पर पहली विकेट गिर चुकी है ऑलरेडी। और बाद बॉल करेंगे डेविड वार्नर को। स्ट्रेट बॉल की बहुत ही एहतियात से इस वक्त डेविड वार्नर खेल रहे हैं। तीसरा ओवर इस वक्त नोकिया ने पहली वो जो कैप्टन थे एरन फिंच उनको आउट किया। इस वक्त विन प्रोडक्शन जो है साउथ अफ्रीका की 18% जबकि ऑस्ट्रेलिया की 82% है इस वक्त। और ये खेले हैं इस वक्त डेविड वार्नर गैप हासिल करने को कर रही है और 4 रन के लिए। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डेविड वार्नर 10 रन के साथ और ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 2.4 ओवर्स। Rabada to and bold. Rabada versus Warner T20 career 13 time facing and 4 times he out to Warner Rabada. And last ball to David Warner, no runs. With no runs, 3 overs completed and 12 for 1. Rabada completed his second overs. For 1. Australia chasing 119 run already made by South Africa. Now Australia need 107 runs on 102 ball. Current run rate is 4. Required run rate is 6.29. Mitchell Marsh and David Warner is playing on crease. Now again Murphy has started his second over and to Mitchell Marsh, and Marsh successful with started his account with boundary. So 16 for 1, 3.1 hours. Nokia will bowl to Mitchell Marsh and hit it on direct pad. Josh Hazelwood, a successful bowler in the Australian side. Two wickets, 19 runs. Josh Hazelwood. Now Nokia will continue his ball to Mitchell Marsh. Mitchell Marsh is playing on 4 runs. 16.1, 3.2 overs play. Nokia to Marsh play directly involved in the hand of bowlers. No, Mitchell Marsh and David Warner is the informed players from Australia. Mitchell Marsh average
by length is the 49, and go 21, short is the 27. So it is good, and trying to play pull out the shot by Nokia, but not success. 16 for 1, 3.4 hours. It's look like that ball is quite low, and pitch position is giving no bounce to Nokia. Nokia will bowl his fifth ball to Mitchell Marsh, but no runs. 143 kilometers per hour ball. David Warner is playing on 10 runs, and Mitchell Marsh is playing on 4. No, second or last ball of second over is bowling by Nokia. Only 4 runs are charged in his second over. This is the fourth over of power play, because in power play only 2 fielders are outside 60 yards. Now again, ball back to the 4 overs completed, and after 2 overs, Nokia charged only 6 runs. And Australian overall runs are 16 for 1 after completing 4.1 overs. इस वक्त हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होने वाला मैच अबू धाबी में 13 मैच, जो कि ग्रुप 1 का मैच है, उसका हम लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं अबू धाबी से। और इस वक्त जो साउथ अफ्रीका के जो T20 वर्ल्ड कप्स के जो वो हैं मौजूद, मोस्ट रन इस वक्त AB डिविलियर्स ने 717 बनाए हुए हैं, ये शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बॉल कराएंगे जी रबादा टू डेविड वार्नर, और गैप हासिल करने की कोशिश की, बहुत ही वाइड बॉल थी, उसको पिक कर लिया डेविड वार्नर ने, और इस चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 4.1 ओवर्स के अख्ताम पर 20 फॉर 1। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 99 रन रिक्वायर्ड है ऑन 95 बॉल्स। 6 का ऑलमोस्ट जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड है। लास्ट 12 बॉल्स के ऊपर 12 रन बना सके हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये रबादा अगेन डेविड वार्नर, नो रन्स। एरन फिंच इज आउट, बेबोमो इज कंटिन्यू Rabada's over, and again Dale Steyn is the most wickets, 30 wickets, and most sixers is the AB de Villiers. No, again, and that is another wicket sit down. David Warner is out by Rabada on 14. Catch in midpoint. Wicket is down. 4.3 overs gone, and 2 wickets down of Australia. David Warner is out on 14. Out by Rabada. It is very clever bowling by Rabada, and very good fielding and by Australian fielders. He got success to out David Warner, already playing on 14 runs, faces 14 balls. "99 runs required on 93 balls."
Average run rate is 6.4, increasing point by point. Australian batsmen required fastest sixes or fours, and on another side, South African bowlers required more and more wickets to pressurize the new players. New player is the Steve Smith, Giant Mitchell Marsh. After all, the David Warner by Rabada. Steve Smith overall 38 innings, 794 runs in T20 International. Very experienced one day internationals and T20 international played by Australia. Steve Smith, a right-handed batsman, face now Rabada ball to Smith. David Warner is out on Rabada ball in this over 24, and this is the bounce ball, and by call one bounce. So for now South African prediction is increasing 20% and Australia 80%, and pull out and play for four runs. I think 4 runs and played for four. Boundary check by third umpire through video footages. No getting that is Mitchell Mars Steve Smith success to mark boundary or not. No, here is 3 runs. Completing 5 hours 23 for 2. 5 hours completed. Now 96 runs are required on 90 ball. Required run rate is quite increasing 6.4. Ravada completed his 3 overs and 17 runs. Now the Kishav Maharaj is continuing. Kishav Maharaj will continue his bowling. Left off spin bowler. Ball for one. Here is the last over of power play. No, again Maharaj to ball batsman. Play for single. Mitchell Marsh. Again Maharaj to the Steve Smith and played for single.
93 runs required on 97 balls. No, if South African teams is want to win this match, then he is trying to getting more and more wickets. Again, play over the umpire and 2 runs by Mitchell Marsh. Last ball of his first over, and no runs there. Called by Mitchell Marsh. Now power play is finished. 6 overs and 28 for 2. Required run rate 6.5. Australia needs 91 runs on 84 balls. Required run rate is 6.5. However, current run rate is 4.6. So today ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी। बैटिंग में साउथ अफ्रीका की जो पूरी टीम है वो 118 रन बना सकी 20 ओवर्स पे, और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 ओवर्स के अंदर 28 रन बना सकी और 2 विकेटें उनकी ऑलरेडी गिर चुकी हैं। अब नए बॉलर हैं शम्सी, और पहले ही बॉल पर स्मिथ ने हिट किया उनको और 2 रन बनाने में कामयाब हो गए। 2 रन के साथ इस वक्त जो ओवरऑल स्कोर 30 for 2, 6.1 hours. शम्सी टू स्मिथ, और ये एक और सिंगल रन बनाने में कामयाब हुए। इस वक्त 31 for 2, 6.2 hours completed. थोड़ा सा स्विंग मिल रहा है इस वक्त शम्सी को, और वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया 31 for 2, 6.2 आवर्स। शम्सी अपने ओवर की तीसरी बॉल करवाएंगे इस वक्त मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श इस वक्त 7 रन पर खेल रहे हैं और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट फील्डर के पास बॉल डायरेक्ट फील्डर के पास पहुंच गई। मार्श का ओवरऑल स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन जो है वो 104 है, जबकि वर्सेस स्पेस बॉलर जो है वो 114 है, 141 है। और ये पुल किया, गैप हासिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कामयाब हो सके। तो मिचेल मार्श जो हैं इस वक्त 8 रन पर, और इस वक्त स्कोर 32 for 2। for 2, 6.4 hours completed. Now Shamsi to Steve Smith, and 2 run. Last 7 hours completed, and again play for 33 for 2 after completing 7 hours.
33 for 2. Maharaj will continue his bowling. इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हो रहा है इस वक्त अबू धाबी के अंदर 13 मैच ग्रुप 1 34 for 2 और ये 2 रन महाराज की बॉल पे मिचेल मार्श ने लिए जिससे 36 for 2 7.3 रन 7.2 रन का ओवर अभी तक हो चुका है। Seven point three, 37 for 2. Smith is playing on 10 and Mr. Morse is playing on 38 for 2. 7.4 hours and that is the playing and that is out and out. Mitchell Marsh is out on 11 plays 16 balls by Maharaj and out on boundary. So third wicket is down by Maharaj. Mitchell Marsh out on after playing 17 balls and 11 runs. Maharaj is third bowler caught at wicket of Mitchell Marsh. मिचेल मार्श जो हैं वो आउट हो चुके हैं 11 रन्स पर 17 बॉल्स का सामना किया और उनको महाराज ने आउट किया। हिट करने की कोशिश की लेकिन जो बॉल है वो डायरेक्ट फील्डर्स के हाथ में बाउंड्री लाइन पर। इस वक्त 6.23 का रन रेट रिक्वायर्ड है और 5.4 का फॉलो कर रहे हैं। 118 रन बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त चेज कर रही है 119 रन। करंटली 81 रन रिक्वायर्ड है ऑन 73 बॉल्स। टॉप ऑर्डर 3 बैट्समैन जो हैं इस वक्त तक आउट हो चुके हैं। पावर प्ले ख़त्म हुआ 6 ओवर्स में और अब 8वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 8वें ओवर की 5 बॉल महाराज इस वक्त करवा चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छी जो मिचेल मार्श की वो थी वो आउट करने में कामयाब हो गए। इस वक्त साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं महाराज और उन्होंने आखिरी बॉल करेंगे अपने ओवर्स की। इस वक्त 6.6 का रन रेट रिक्वायर्ड है। महाराज अपनी आखिरी बॉल करवाएंगे अपने ओवर की। 38 for 3। इस ओवर में उन्होंने 5 रन ऑलरेडी दिए हैं और ये सिंगल रन बनाने में कामयाब हो गए। 8 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 39 रन्स हो चुके हैं। 39 for 3 और रिक्वायर्ड रन रेट इज़ 6.66। इस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऑस्ट्रेलिया का इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन दूसरी साइड पर जो उनकी विकेट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं कि वो आउट हो जाए।
जितनी ज़्यादा विकेट्स डाउन होंगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को, और ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है वो अंडर प्रेशर में आ जाएंगे, और अंडर प्रेशर की वजह से ही वो आउट हो रहे हैं। इस वक्त 3 खिलाड़ी जो टॉप ऑर्डर्स के हैं वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो बवूमा जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं वो ट्राई कर रहे हैं अपने मैक्सिमम बैट्स बॉलर्स को यूज़ करके बैट्समैन को आउट कर सकें। इस वक्त मोस्ट रन्स प्लेइंग जो है वो रिवर्स स्विच जो स्वीप शॉट ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त सक्सेसफुल हैं बेन बकट। तो एनालिसिस करेंगे इस वक्त मैक्सवेल स्कोरिंग एरियाज वर्सेस स्पिन इन 2020 लास्ट 3 ईयर्स। तो स्कोर लेग साइड पे बहुत ज़्यादा स्कोर ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। नए आने वाले बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ज्वाइन करेंगे इस वक्त। और बॉलिंग के लिए इस वक्त आए हैं शमसी। शमसी अपना दूसरा ओवर करेंगे इस वक्त तक 6 रन दे चुके हैं। अब तक स्टीव स्मिथ जो हैं वो 12 रन पर खेल रहे हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने अभी 2 रन बनाए हैं इस वक्त। और 8.2 ओवर्स का मैच अब तक हो चुका है, 41 फॉर 3। और शमसी इस वक्त बॉल कराएंगे। मैक्सवेल को 41 फॉर 3, और ये मैक्सवेल ने सिंगल के लिए खेल दिया है इस वक्त। और 42 फॉर 3। और ये मिसफील्ड हुई, और 4 रन्स के लिए इस वक्त खेल दिया है इन्होंने। और 1.4 ओवर्स में 46 for 3 after 8.4 overs. Shamsi bowled his 5th ball to Smith. इस वक्त 5 जो फील्डर्स हैं वो 60 यार्ड्स के हैं, लेग साइड में है, मिड विकेट एंड लॉन्ग ऑन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, और लॉन्ग ऑफ के बाद है, और डीप आउट पे इस वक्त फील्डर्स फील्डिंग कर रहे हैं। आखिरी बॉल करेंगे इस वक्त अपने शमसी अपने ओवर की, और ये मिस किया, इनसाइड एज हुआ, लेकिन ये रन आउट का भी चांस, लेकिन वो मिस हो गया। रन आउट का भी 47 फॉर 3। 9 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 5.2 रन रेट चल रहा है इस वक्त, और 6.5 का रन रेट इस वक्त रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया को। स्मार्ट टेक लाइव मैच जो चैनल है उसकी लाइव कमेंट्री इस वक्त आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के ऊपर। अबू धाबी से 13th मैच ग्रुप 1 का ये मैच इस वक्त देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो 9 ओवर्स का मैच इस वक्त तक हो चुका है, 47 फॉर 3। नेक्स्ट बॉल करवाने के लिए इस वक्त आए हैं, तो क्रिएटर्स जो है वो नेक्स्ट बॉल करवाने के लिए आए हैं इस वक्त।
रिट्रेस जो है वो बॉलिंग के लिए आए हैं इस वक्त। ओवर की पहली बॉल करवाएंगे। 47 फॉर 3 और सामना करेंगे इस वक्त स्मिथ बॉल की, और ये डीप पॉइंट की तरफ खेले हैं इस वक्त। $47 for 3, 9.1 hours. $48 for 3. Retrace bowling to Steve Smith. .4 hours completed, and 49 for 3. And play straight, but only for single run. That is 50 completed, 9.5 hours complete, and Steven Smith on 98. Now Beatrice will play last ball. $51 for 3. इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो है वो ड्रिंक ब्रेक्स हो चुकी हैं। हम 3 मिनट की हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपनी लाइव कमेंट्री जो है वो जारी रखेंगे।
हम दोबारा लाइव कमेंट्री पर आए हैं। इस वक्त ड्रिंक ब्रेक थी इसमें, और अब दोबारा खेल शुरू हुआ जाता है। 11वें ओवर का इस वक्त खेल चल रहा है। 10.4 हो चुके हैं और 55 फॉर 3 इस वक्त तक। इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल और स्टीवन स्मिथ जो हैं वो मौजूद हैं क्रीज के ऊपर। ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो 7 रन पर खेल रहे हैं, जबकि स्टीव स्मिथ जो हैं वो इस वक्त 21 रन के ऊपर खेल रहे हैं। बॉलिंग इस वक्त महाराज करवा रहे हैं, और ये LBW की अपील की महाराज ने, लेकिन अंपायर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और इस वक्त रिव्यू जो है वो नहीं लिया गया। और इस तरीके से 11 ओवर्स के अख्ताम पर 55 फॉर 3 महाराज का ये तीसरा ओवर जो है वो ख़त्म हुआ। 3 ओवर्स में महाराज ने इस वक्त 15 रन दिए हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 64 रन रिक्वायर्ड हैं 54 बॉल्स पर। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो करंट रन रेट चल रहा है वो 5 का रन रेट इस वक्त चल रहा है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इंक्रीज़ होते हुए 7 तक पहुंच गया है। तो इस वक्त नई रिट्रेस जो है वो अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए आई हैं। पहले ओवर में उन्होंने 4 रन दिए थे, तो 12वां ओवर इस वक्त मौजूद है। बड़ी एहतियात से इस वक्त साउथ, और ये चांस था आउट करने का, लेकिन कैच थोड़ा सा दूर थे बॉल, और रिट्रेस जो है वो कैच नहीं कर सके। इस वक्त स्टीव स्मिथ 21 पे खेल रहे हैं। 20 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है, और एक सिंगल रन के लिए खेले दोबारा 11.2। और रिट्रेस जो है इस वक्त 11.2 ओवर्स का मैच हो चुका है। 56 फॉर 3 साउथ अफ्रीका ने आज पहले खेलते हुए 118 रन का टारगेट दिया था, जिसको इस वक्त ऑस्ट्रेलिया चेज़ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया, जो कि अरुण फिंच का बहुत अच्छा फ़ैसला साबित हुआ, जिसमें वो इनिशियली तौर पर बहुत सारे जो बैट्समैन थे उनको आउट करने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद कुछ प्लेयर्स जो हैं, मार्करम ने 40 रन की इनिंग्स खेली, और साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है वो 118 तक पहुंचाया। अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 119 का टारगेट मिला हुआ है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया 63 रन रह गए हैं 56। और ये फ्रिट्रिस ने बॉल की, और एक अनदर स्कोर, और इस स्कोर के साथ 57 फॉर 3। 11.3 ओवर्स का मैच हो चुका है, और ये गैप हासिल करने की कोशिश की, लेकिन 2 रन बनाने में, लेकिन 1 रन से ही बन सका। 11.4। और इस वक्त ब्रिटिश जो है अपने ओवर की ये 5वीं बॉल करवाएंगे, और 58 फॉर 3। रन रेट इस वक्त 5.27 और रिक्वायर्ड रन रेट 6.7। और ये पॉइंट पर खेले हैं सिंगल रन के लिए। इस वक्त 1 रन का और इजाफा। इस वक्त स्टीव स्मिथ 23 रन पर, जबकि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 9 रन पर खेल रहे हैं, और उन्होंने 13 बॉल्स का इस वक्त तक सामना किया है। आखिरी बॉल करेंगे इस वक्त फ्रिट्रिस अपने दूसरे ओवर की। ऑलरेडी वो 8 रन दे चुके हैं, और ये गैप फिर पॉइंट पर खेले। 12 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त जो करंट रन रेट है 4.91, 59, 60 फॉर 3। इस वक्त 59 रन रिक्वायर्ड है ऑन 48 बॉल्स। ऑन 48 बॉल इस वक्त रन रिक्वायर्ड है 59 रन रिक्वायर्ड है 48 बॉलों का। रन रेट जो है वो इंक्रीज़ होता, पहले 5.90 था जब इनिशियल इनिंग्स थी, अब वो 7.3 तक पहुंच गया है इस वक्त।
इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हर ओवर के अंदर 7 रन लाजमी बनाना है। ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त और स्टीव स्मिथ मौजूद हैं। टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन साउथ अफ्रीका ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। ये दोबारा बॉल के लिए आए हैं महाराज अपने आखिरी ओवर करवाने के लिए। ऑलरेडी वो एक विकेट ले चुके हैं 15 रन के एवज। लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलर हैं और ये करवाया लेकिन डायरेक्ट फील्डर के पास, और दूसरी बॉल करवाने के लिए आए हैं और दूसरी बॉल की इस वक्त स्विप को एक सिंगल रन लेने में कामयाब हुए। $58 रन रिक्वायर्ड ऑन 46 बॉल हैं और ये उठता हुआ एक शॉट खेला फील्डर्स के ऊपर से और ये कैच करने की कोशिश की लेकिन वन बाउंस करके फील्डर के पास। इस तरीके से स्मिथ जो हैं स्टीव स्मिथ इस वक्त 25 रन पर और 62 फॉर 3, 12.3 ओवर्स, और ये तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त और ये स्टीव स्मिथ कामयाब हुए इसमें गैप हासिल करने का और 4 रन। इस वक्त 4 रन के इजाफे से 66 फॉर 3। स्टीव स्मिथ का इनफरादी स्कोर इस वक्त 23 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है इस वक्त तक। महाराज इस वक्त बॉल करेंगे अपने ओवर की 5वीं बॉल की। उन्होंने ऑलरेडी वो 21 रन दे चुके हैं अपने 3.4 ओवर्स में। 1 रन का और इजाफा आखिरी बॉल करेंगे इस वक्त महाराज मैक्सवेल को और एक सिंगल लेने में कामयाब हुआ इस वक्त। 68 फॉर 3। महाराज के इस वक्त 4 ओवर्स मुकम्मल हुए। इन 4 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं वो अब सामना कर रही हैं। पहला मैच वर्ल्ड कप का जो कि खेला जा रहा है इस वक्त अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में। तेरह ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 68 फॉर 3 और 51 रन रिक्वायर्ड है इस वक्त 42 बॉल्स पर। और ये स्वीप खेलने की कोशिश की और कामयाब रहे इसमें सिंगल बॉल्स के साथ ये 4 रन। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो इस वक्त 15 के मजमूई स्कोर पर मौजूद हैं और ओवरऑल रन इस वक्त 72, 13.1 ओवर्स। शमसी अपना तीसरा ओवर करवाएंगे इस वक्त और ऑलरेडी वो 2.1 ओवर्स में 17 रन दे चुके हैं इस वक्त। इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल जो है ना 15 रन 15 बॉल 30 रन और 27 बॉल पर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 72 फॉर 3, 13.1 ओवर्स, 47 रन रिक्वायर्ड है 41 में। और ये शमसी की बॉल को स्ट्रेट खेले सिंगल रन के लिए मैक्सवेल 13.2।
तो इस तरीके से ये अब 47 रन रिक्वायर्ड ऑन 40 बॉल। रन रेट डिक्रीज़ होता हुआ इस वक्त, कि पहले ये इस वक्त 7 से ऊपर हो गया था, लेकिन अब ये 7 से नीचे आ गया रिक्वायर्ड रन रेट। टारगेट बहुत थोड़ा था 118 रन का। 73 फॉर 3। तीसरी बॉल पर सिंगल रन लिया इस वक्त शमसी ने, बॉलिंग करवाई, और इस वक्त मैक्सवेल इस वक्त मौजूद हैं 16 रन के मजमू स्कोर पर, और ये बिल्कुल स्ट्रेट खेला, और ये सिंगल रन, बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद। $74 for 3, 13.4 hours। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चेस कर रहा है 118 रन, और 119 रन का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका ने। 118 और एक रिवर्स स्वीप खेला इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल ने, और 2 लेने की कोशिश की, लेकिन सिंगल रन 13.5 ओवर्स में 175 फॉर 3। 44 रन रिक्वायर्ड ऑन 37 बॉल्स। तीसरे ओवर की अभी ये आखिरी बॉल करेंगे इस वक्त शमसी। ऑलरेडी 20 रन दे चुके हैं, और ये खेले लेकिन कोई रन नहीं बन सका। 3 ओवर्स के अख्ताम पर इस वक्त 75 फॉर 3। 14 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है। अगर हम रन रेट लिखें तो 7 का रन रेट इस वक्त रिक्वायर्ड है, और ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त 44 रन और 36 बॉल्स पर रिक्वायर्ड है। क्रीज पर इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाए हैं और 27 बॉल्स पर इस वक्त खेल रहे हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल 16 रन और 15 बॉल। और महाराज ऑलरेडी अपना ओवर कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि नोकिया ने 2 ओवर करवाए हैं। 6 रन के 1 विकेट आउट हुई है, जबकि रबादा 3 ओवर्स में 1 विकेट उन्होंने भी लिया और 17 रन दिए हैं। अब देखते हैं कि एरन फिंच जो है ना किस बॉलर को लेकर आते हैं, और ताकि रन्स को डोगोमा जो है वो किस बॉलर को लेकर आते हैं और अपने रन्स को रोकने की वो कोशिश करते हैं इस वक्त। $75 for 3 after completing 14 overs. Australia is chasing 119 runs. Today Australia won the toss and selected to field first. So initially South African batsmen are out, and then Australian bowlers are dominated on South African batsmen. Now Nokia continue his third over and play to Smith for single run. $76 for 3 after 14.1 hours. Nokia to Smith. Now 76 for 3, 14.2 hours completed. Now Steve Smith and Glenn Maxwell trying to increase the current run rate. So in last hours, batsman can easily chase this target. And appeal by Nokia, but no response from umpire. Now Bhuma is asking to wicketkeeper, but no review taken by South Africa. DRS times is up now, 14.3. It's quite up, and also hit it on thigh.
slow delivery by Nokia to Smith. Now Nokia is continuing his over to Smith and pulled by Smith for 4 runs. For 4 runs, and with this 4 run, 80 for 3. Now Smith is on 35. Nokia is bowling on fifth ball, and then another hit, and excellent catch. Nokia on Nokia ball, and Steve Smith is out. Steve Smith out on 35. Excellent catch on the ball of Nokia. Catch by Markram. Excellent catch. $80 for 4. Now Australia need 39 runs on 31 balls. 4 wickets are down. 4 wickets are down of Australian teams. Top order. No new batsman is Stoynes. Stoynes joined to Glenn Maxwell. Glenn Maxwell already playing on 17 runs. Stoynes now will face Nokia on his last ball of 15th over. Run open his account with 81 for 4. 15 hours completed, and Nortje completed his third over. Already gotten 2 important wickets of Australian batsmen. Now Australia needs 38 runs on 30 balls, with the average of required run rate is 7.6. Glenn Maxwell is on crease, very experienced batsman by Australian teams. Now only 5 overs left, 30 balls remaining, 38 runs required, 7.6 run rate. Super 12 match, Group 1 first match is continuing in Abu Dhabi Cricket Stadium between Australia and South Africa. Now it is now tight game because South Africa needs more wickets and Australia needs 38 runs. More top order 4 batsmen are out, and Shamsi bowled to Maxwell. Last over. $81 for 4. Out, and another wicket is down. Shamsi bowled to Maxwell, and he is trying to sweep but missed and directly in middle stamp. So Tabrez Shamsi completed his
T20 50 wickets after bowling to Glenn Maxwell. Glenn Maxwell out on 18. Already played. No, 5 wickets down of Australian team, and South Africa back into the game. Tabrez Shamsi out, Glenn Maxwell. 18 on 21 balls, 1 4 and 1 6. Now on 7th position, Australian batsman join Matthew Wade, join Stoinis. 81 for 5. 2 balls are completed of 16 overs. Now 38 runs required on 28 balls. 5 wickets already down. Top Glenn Maxwell missed the spin ball of Tabrez Shamsi, and he is trying to sweep this ball, but out. 81 for 5. Now 38 runs required on 28 balls. New batsman is the Matthew Wade. Shamsi will bowl to Wade and single run. 15.3 overs completed. Matthew Wade is the new batsman. Tabrez is continue his bowling. 82 for 5 after 15.3 overs. Shamsi will bowl his fourth ball to Stoinis, and he is also trying to sweep. He is also follow Glenn Maxwell. 37 runs on 26 balls. Now required run rate is also increasing. 2 balls left of this spell. Well bowled by Shamsi. Now South Africa win production is increasing on to 32% from 20% initially. Now win production is prediction is increasing to 32%. 82 for 5 after completing 15.5 hours. 1 wickets Shamsi is already, and another one. Now 83 for 5s after completing 16 overs. So required run rate is quite increasing on 9. 36 runs on 24 balls required. Australia required 36 runs. Top order batsman already out. Tabrez Shamsi completed his fourth overs. Overall, 43 matches played and 50 wickets completed. Strike rate is 19.2. Economy is the 6.76. 5 times he got 3 wickets, and best is the 4 wickets on 25 runs. 16 overs completed, 83 for 5. Australia needs
36 runs on 24 balls. Only three extra runs are charged by South African bowlers and fielders. So new batsman Stoinis and Matthew Wade is on crease. As Rabada, Nokia, and British hours is remaining. Maharaj and Shamsi already completed his overs. Now Stoinis with single run. Bowler is the Rabada. Rabada will start his overs. Currently, South African fielder and bowler is trying to out more and more wickets, so he can pressurize the Australian batsmen. Now, top order five batsmen are out. 35 more runs required on 23 balls. With the required run rate is 9, 84 for 5, 16.1 hours completed. Rabada will continue to achieve it. Matthew Wade play for 1 run. Australia's last five series. Rabada to Stoinis and play for single run 86. Stoinis is playing on 3 runs. However, Matthew Wade is on 2 runs. Current run rate is the 5.21. Required run rate is the 9.43. South Africa and Australia playing first match of Super 12 and overall World Cup 13 match. Another misfield, drop catch and charge with 4 runs. Rabada to it is very difficult, but it is very important. Catches win matches. 90 for 5. Now Rabada will bowl his last over ball to Matthew Wade. 90 for 5 after completing 16.5 overs. 29 runs required on 19 ball. Last ball of his over and reverse sweep by Matthew Wade. And with this 4, 94 for 5.
17 hours. So Australia 94 for 5 after 17 hours. Now Australia needs 25 runs on 18 balls. Required run rate is 8.3. Pretorius will start his third over. In last over, 2 fours by Matthew Wade by a reverse sweep. Reverse pull. Matthew Wade is on playing on 10 runs, 94 for 5. Pretorius will continue his bowling third overs. Australia need 25 runs to win 80 on 88 ball. Two wickets are gotten by Nokia and one Rabada, one Maharaj, one Shamsi. 5 wickets down of Australia team. Now 2 overs are remaining by Pretorius and 1 hour is Nokia. Captain Bavuma is settled down his fields. So mostly he is trying to save the boundaries and sixes. Pretorius to Stones and single run. "24 runs on 27 balls, 70 point." Now again, win prediction is again down to 21% of South Africa because in last over, two continuous boundaries are hit by Matthew Wade. Now again, South African team required wickets, so run rate may be down. Australia need 24 runs more from 17 balls. Pretorius wide ball. "96 for 5", 17.1 overs completed. Just a single in deep and another run, 97. .3 overs already completed. 2.2 overs already completed by Pretorius. Trying to hit down fours and sixes, but Pretorius is trying to slow down balls using different type of technology, bowling techniques, and trying to stop Matthew Wade to hit fours and sixes. Played for single run.
Now 20 runs required on 14 balls, 5 wickets in hand, 6.6 run rate required. That is not important for Australia, that in wickets in the hand, but run rate may not increase or wickets not down of Australian teams. Now 100 completes in 17.5 hours. Most highest score is the Steve Smith 35 runs. Very good catch by Markram. Now 19 runs required on 13 balls. Last ball of request to Matthew Wade. Play for single run. Over completed. Uh, 12 balls remaining. 18 runs required to Australia win the match against South Africa. Now the venue will decide who will continue the next over. Nokia. Now Australia is playing on 101 for 5 after completing 18 overs in 13th match Group 1 at Abu Dhabi. This is the Super 12 first match between Australia and South Africa. Australia won the toss early and then selected to field. South African team bound to 118 after 9 wickets, 20 overs completed, but now Australia is chasing 119 in 20 overs. Australia need 18 runs on 12 balls. Last fourth over, Nokia will continue his fourth over. Already successful bowler, 11 runs and 2 wickets. In last over, he successfully got the wicket of Steve Smith. Now this over is the key over by Bivemo. That if this over is successfully got successful any wicket or stop runs, then next over will be easily faced by South African bowlers. This is the key winning over by Nokia. As already comparison 101 for 8, but South Africa 118 after 18 overs. Australia 101 for 5. Same position at South Africa is also 101 on 18 hours. Nokia to Matthew Wade, play for single run. One zero two for 5, 18.1 hours. Nokia is bowling to Steines. Steines is playing on 6 runs. Nokia to Steines. And catch there. Nokia drop it. Very difficult catch for bowler with a speed and 2 runs.
but I think he stopped for 4 runs. If his finger not touched to ball, then directly this one the for four. So he saved 2 runs, 104 for five. Now 15 runs required on 10 balls. Third ball is continue. Nokia to Steines and oh, play for one ball, 1 run. Now Matthew Wade will face Nokia. Now fourth ball by Nokia and hit over the wicket for single run. Third man picking 106 for 5, 18.4 hours. Only 8 balls left, 13 runs required. Now Nokia to Steines and like or and 4 runs and 4 runs. Now 110 for 5. Only 9 runs required, 7 balls. 4 runs. Fourth over is going to finish. In this over, Nokia charged 9 runs. Nokia to Steines and only for single. Play for single. 1-1-1 for 5 on 19 overs. Now 8 runs required on 6 balls. Matthew Wade and Marcus Steines is available on crease. Australia need 8 runs to win this match against South Africa in first Super 12 13th match Group 1 at Abu Dhabi. Firstly, Australia won the toss and chose to field. South Africa full team played 20 hours and made 118 runs. Now 119 total runs required for Australia, but top 5 order batsmen are already out. Now currently Matthew Wade and Marcus Stoinis is on crease facing. I think last over will be bowled by Pretorius because all uh, bowlers are completed their 4 overs. Now last over is by Pretorius. 8 runs required on 6 balls. 1-1-1 for 5. Pretorius to Stoinis. And he used the crease and play for 2. Maybe yes, he successfully completed 2 runs on first ball. Now 6 needed on 5 balls. Five balls remaining and 6 runs required to win this match by Australia. Pretorius bowled to Stoinis. Stoinis already uh, playing on 16 runs.
and play for directly hit near the umpire, over the umpire, and for 4 runs. Now only 2 runs required on 4 balls. 117 for 5, 19.2. 2 runs required to win the match. 117 for 5. Last 4 balls of Pretorius. Australia need 2 runs on 4 balls. Pretorius already bowled 2 balls and got 6 runs. No, all fielders are close to safe single run and dot ball. Now all players are inside the circle to save the single runs by uh, the South African captain. 3 runs, 3 balls, 2 runs required. The Buma is now closing his fielders in 60-yard circles. Oh, and that is the, I think, 4 runs by Stoinis, and Australia win this match. Australia win this match by Australia won by 5 wickets. Australia won by 5 wickets this match. Earlier, Australia won the toss and chose to field. Now, Australia won this match. आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच जो कि सुपर 12 का था, 13th मैच ग्रुप 1 अबू जहबी के स्टेडियम में खेला गया और साउथ अफ्रीका ने पहले 118 का She made the difference today. But a wonderful bowling effort. 118 का रन टारगेट दिया और 118 रन के टारगेट पे 118 रन के चेज को चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम बासानी 19.4 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच पहला मैच 5 विकेट से जीत लिया है। इस वक्त ग्राउंड में प्लेयर ऑफ द मैच का डिसीजन हो रहा है कि इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का होगा। स्टाइनिस ने 24 रन्स 16 बॉल्स पर और 3 चौकों की मदद से, जबकि मैथ्यू वेड ने 15 रन बनाए 10 बॉल्स पर 2 चौकों की मदद से। $118 रन्स और 9 का टारगेट साउथ अफ्रीका ने दिया था, लेकिन इसको बआसानी आखिरी ओवर में 2 बॉल्स अभी तक रिमेनी थी, इससे पहले ही चेस कर लिया।
इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच खेला और वही जीत कर टॉप पोजीशन पर आ गया +.253 के रन रेट से।